Hello, good evening. Welcome to the Mesh YouTube channel. This program is Abhimanyu Calling Abhimanyu. Today we are going to talk about the child pornography cases, and to talk more about it, from where this case actually we are going to discuss, where we got this information and why is it so important to talk about child pornography. Let's get the other perspective from Mr. Abhimanyu. Hello, Abhimanyu. Hello, how are you? I'm fine, how are you? Good too, thank you. So, this child pornography is a very serious issue. It's a serious matter. Yes. What's your take on that? Well, certainly it is an issue that should worry everybody, and because children are vulnerable, and from what I have heard, activists who work in the field of child welfare, that because they are not a category that votes, actually nobody really cares about what happens to children, and this should change, certainly. Right. As Abhimanyu said, we are going to pick up today's newspaper, and we have the Indian Express, right? Yeah. So there is a report that came out on Indian Express, and it's about that child pornography report. So will you please share a little detail about it? Yes. First, I would like to give you the brief. Yeah. The report is in today's Indian Express. It's also a story with a byline with the reporter's name being Muhammad Haver. So I suppose it's an exclusive story. Right. And it's not taken from the agencies, and there is True. a byline. And the headline is alarming. It says US alert for India, 25,000 child porn cases uploaded in 5 months. That's huge. Indeed. And what it says, I think the headline could be a bit more clear. What it says is not cases, but actually videos or material has been uploaded. Okay. Child porn videos have been 25,000 child porn videos have been uploaded in the last 5 months. It creates a confusion because the cases have not started. There have been a few cases which have been filed. Okay. So 25,000 videos. Then if you go into a little bit detail here, then most interestingly, this has been shared by the National Center for Missing and Exploited Children with the acronym NCMEC. Right, NCMEC. G. Right. Which is based in the US, and they have shared this data with the NCRB, which is National Crime Records Bureau. Okay. And the Home Affairs Ministry is taking charge of the whole matter. Mm-hmm. And our capital has topped the list. And from what I have read before, in Bombay, 500 cases have been found. Okay. And in several other states like West Bengal and Maharashtra, such cases have cropped up. Right. But the data is from 5 months, but it is as recent as January 23, so it is very fresh data. Right. So as you can see, and you yourself can read this news, read this report, it also gives us a detail about the plans, how government is trying to tackle these culprits who are behind these crimes, such heinous crime that is committed against children. So, Abhimanyu, could you please share that if government has any plans of taking care of these kind of accusers, those violators of these kind of crimes? What are the details you have with you? Yes, indeed. The government has been proactive. Right. And it seems that several FIRs have been registered and arrests also have been made. However, and interestingly, they have codenamed it Operation Blackface. Operation Blackface? Yeah, Blackface. Okay. That is the code name which they are using? Yeah, in Maharashtra. In Maharashtra only? Yeah, it seems action is there, quite prominently in Maharashtra and some other states. So this report talks about these actions and the government initiative only in the state of Maharashtra? No, others also. But prominently Maharashtra, yeah. Okay. Maharashtra is from where police officers have spoken to them, it seems. Let me see where the byline is from. It is Mumbai, actually. Right. So that's why I think the reporter has got it, the quotes from there, the details from the police officers from there. Now, a little bit about NCMEC also. Let us get into that, because it is an organization which was established by US Congress in 1984, whose mission includes reducing child sexual exploitation and preventing child victimization. And this is the first time that the data has been shared with India, actually. Okay. And these details are being passed, as you asked what kind of action has been taken. 7 FIRs have been registered in the state of Maharashtra. So far? So far. This year only you are talking about, or in the last 5 months? In the last 5 months. Okay. One question which our viewers might also have in their mind, that अक्सर हम देखते हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो ये मामला है, जो बच्चों की यौनिकता के लेकर के जो यौन
वीडियोस बनाए जाते हैं, जो पोर्न वीडियोस उनके अपलोड किए जाते हैं, इसके जो कंज्यूमर्स हैं या फिर इसके पीछे जो है विदेशी लोगों का भी हाथ होता है। कई सारे फॉरेनर्स हैं, देयर आर मेनी फॉरेनर्स हु आर आल्सो इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ थिंग। क्या उसके बारे में इस रिपोर्ट में कोई चर्चा है या फिर उसको आप कैसे देखते हैं? दो बातें मैंने आपसे पूछी, दोनों के बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो ये मैं सावधानी बरतना चाहूँगा कि किसी भी कम्युनिटी को ऐसा नहीं है कि हम सिंगल आउट करें, लेकिन जो खबरें हमें मिली हैं, ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें कि कुछ विदेशियों के नाम आए थे जो कि जिन्होंने यहाँ के ऑर्फनेजेस पे खास तौर पे जो है वहाँ से उन्होंने बच्चे सोर्स किए थे और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। अगर आप नेट पर जाएंगे तो आपको ये खबरें मिलेंगी। खास तौर पे गोवा में ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी प्रचलित है। आप देख सकते हैं बॉम्बे में एक्चुअली 500 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो गोवा से काफ़ी पास है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, चूंकि गोवा में विदेशी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। जी जी जी। और चूंकि इस प्रकार की खबरें हमारे टीवी चैनलों में, न्यूज़ के अन्य माध्यमों में, वी डोंट सी दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स एट ऑल। नहीं, तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए टीवी में भी ये चीज़ नहीं आई है, तो हमें पता नहीं इसमें कौन है, कौन अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है उसको छुपाने के लिए। लेकिन वो तो हमारे लिए स्पेकुलेशन होगा, चूंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है, तो और वी कैन नॉट रियली स्पेकुलेट बियॉन्ड द पॉइंट विदाउट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। व्हाट वी हैव इज दैट एक्चुअली वी डोंट हैव आवर ओन डेटा, which I find quite problematic. Okay. Because why should we depend on others? If foreigners may be involved in the case, in such cases, then we should generate our own data to be completely impartial. And what I think is most important is that such people should be screened at the airports while coming to India. True. They should not get a visa to come to India. If they have any such case registered anywhere in the world, and especially if they have ever been pulled up in India, their visas should be completely debarred. क्या इस रिपोर्ट में आपको या फिर आप अपने स्तर पे आपको ऐसी जानकारी है कि हमारी सरकार के पास ऐसे लोगों को हमारी सरकार ने स्क्रूटनाइज करके रखा हो, ऐसे लोगों की लिस्ट बना रखी हो, ये जो दरिंदे किस्म के लोग हैं, ये हमारे बच्चों के बारे में इस प्रकार की चीज़ों के लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे लोगों की क्या सरकार ने लिस्ट बनाई है? और एक और सवाल इससे मैं जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगा कि क्या इस लिस्ट को लेकर के या फिर बच्चों के आइडेंटिटी को लेकर के आधार का कोई इसमें योगदान है? जो आधार नंबर है उसके बारे में कुछ जानकारी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी देखिए, तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि ऐसी कोई लिस्ट तो एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके। अगर मैं गलत हूँ तो फिर ये हम भी चेक करके उस पर वापस आएंगे अगले एपिसोड में। लेकिन अभी तक जैसी मेरी जानकारी है मेरे अपने जर्नलिज्म में कि ऐसी किसी लिस्ट का नाम तो मैंने नहीं सुना है। ब्लैक मनी वालों की लिस्ट है और तरह की लिस्टें हैं, लेकिन पीडोफाइल्स की लिस्ट तो मैंने नहीं सुनी है, लेकिन ये बननी चाहिए। और क्योंकि इसमें लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि देखिए आप प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस बिल जो है 2019 में, जी अमेंडमेंट बिल आप बात कर रहे हैं। हाँ, अमेंडमेंट बिल, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, उसको अमेंड किया गया है। सो इट हैज वाइडेंड द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी which this report says, mentions very pertinently. It now covers any visual depiction including photograph, video, digital or computer generated image indistinguishable from an actual child, an image created, adapted or modified but appear to depict a child. तो ये अच्छी चीज़ है कि हमारे पास अभी ये जो है लीगल उसको एक फ्रेमवर्क है उसको डील करने का। मतलब सरकार ने जो है ये जो 2019 में पॉक्सो एक्ट में जो संशोधन लाया है, काइंड ऑफ अमेंडमेंट आवर गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अंडर दिस एक्ट, आप ये बता रहे हैं इस रिपोर्ट के आधार पे कि इसमें जो वो दायरा है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का, चिन्हित करने का, उसको पहचानने का, वो बढ़ गया, वो उसकी विस्तार मिला है उसको, और अब उसमें कई सारी चीजें जोड़ दी गई है जिससे कि आप इस प्रकार के पीडोफाइल को आइडेंटिफाई करके उसको चिन्हित कर सकते हैं। पहले तो आप खास तौर पे बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर जिसने भी वीडियो अपलोड किया फिर वही चीजें देखिए इन्होंने कैसे किया, ये बड़ा जो है बड़ा तकनीकी ये जो है एक तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है। ओके, विच द रिपोर्ट सेज software that troll social media platforms are also used. Okay. And these software have an algorithm that looks for nudity and expression of stress on the face of a child, following which it is pulled up and passed on to law enforcement agencies. जो हम समझ सकते हैं सेल्फ एविडेंट है कि सॉफ्टवेयर उस बच्चे के जो है चेहरे को उसमें डिस्ट्रेस में होते हुए आइडेंटिफाई करके वो बता देता है कि यहाँ पोर्नोग्राफी हो रही है। और आधार वाला सवाल जो आपने पूछा जी, तो उसमें ये बात सही है कि आधार को लेकर बहुत तरह के डिबेट हैं, ये हमारा स्कोप हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं बिल्कुल। लेकिन उसमें जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि आधार का इस्तेमाल करके जहां तक मेरी जानकारी है पुलिस ने मिसिंग बच्चों को खोजने में काफी सफलता हासिल की थी। तो अगर हम उस आधार को भी इस चीज में इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है इसमें काफी लाइकली है कि देखिए बच्चे जो वल्नरेबल होते हैं वही एक्सप्लॉइटेड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मिसिंग बच्चों की संख्या काफी ज्यादा और यह मतलब उसको आइडेंटिफाई करने में सहूलियत हो सकती है आधार। हाँ, तो और आपने एक ये बात बताई हमारे दर्शकों को कि जो टेक्नोलॉजी का एक सॉफ्टवेयर है ट्रॉल नाम की, जिस पे किसी भी बच्चे की तस्वीर
वो आइडेंटिफाई कर सकता है, देखते ही वो बता सकता है कि बच्चा के साथ क्या पीडोफिलिया की गई है, क्या उसके साथ यौन दुराचार किया गया है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी भाव भंगिमाओं को पढ़ के वो सॉफ्टवेयर जो है इस प्रकार की जानकारी दे देता है। जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर का नाम एग्जैक्टली आई डोंट नो अगर हमने सही देखा है वो, लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ वो सॉफ्टवेयर वो जो है नाम इसमें शायद नहीं है वो उसको जो है, लेकिन उसके तरीके ऐसे हैं कि अच्छा। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो नजर रख सकता है। Okay. तो वो उसको जो है उस तरह से वो आइडेंटिफाई कर लेता है ऐसे किसी भी इमेजेस को। ओके, तो आज की इस एपिसोड में, इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। विल बी बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ अभिमन्यु कॉलिंग अभिमन्यु। एंड हाउ डू यू फील अबाउट आवर कन्वर्सेशन अबाउट दिस टॉपिक व्हिच वी चूज? प्लीज मेंशन इन द कमेंट, डू राइट टू अस। आपके क्या विचार है, आपको कैसा लगा ये वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखलाएं, और वापस हम मिलते हैं आपसे। जी बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद।